गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नाइट टाइम अरेस्ट ऑफ वुमेन। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मदुराई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट का, उन्होंने जो BNSS 2023 के प्रोविज़न है जिसमें कि वुमेन को नाइट में अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टरी बताया है, मैंडेटरी कहा है कि नहीं है ये। तो एक सिंगल जज ने कहा कि 8 बजे के बाद जो है वो सेक्शन 46 क्लॉज 4 ऑफ CRPC कहता है कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 जज बेंच ने लेटर क्लैरिफाई किया कि प्रोविज़न ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो 2 सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 435 ऑफ 43(5) ऑफ BNSS में, जिसमें कहा गया है कि कोई भी विमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। और वुमेन अगर ज़रूरत पड़ती है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है उनको प्रायर रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट से अरेस्ट करने से पहले। अरेस्टिंग ऑफिसर जो है वो वुमेन को टच नहीं कर सकते अनलेस एक वुमेन पुलिस ऑफिसर हो और सर्कमस्टांसेस की ज़रूरत पड़े। सेक्शन 46(4) जो है CRPC का, वो सेफ्टी ऑफ वुमेन की बात तो करता है लेकिन बताता नहीं कि क्या एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, ठीक है। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो 46(4) है CRPC का, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नॉन कंप्लायंस के उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो इसलिए सिर्फ ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर्स की पब्लिक ड्यूटी होती है और उनको इस प्रोसीजर को हिंडर नहीं करना है लॉ इन्फोर्समेंट करते हुए। और अगर कोई सीरियस क्राइम कमिट किया है किसी ने वुमेन ने नाइट में, तो इमीडिएट अरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सेक्शन 46 जो है 4 CRPC का, इवन 135th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी रिकमेंड किया कि विमेन जो है उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रायर परमिशन के साथ अरेस्ट किया जा सकता है। 154th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी यही जो है रीअफर्म किया। और इसके बाद ही जो है CRPC 2005 में इस जो है वो सेक्शन को डाला गया था, ठीक है। और इससे पहले नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि कोई भी वुमेन को डिटेन नहीं किया जा सकता बिना लेडी कांस्टेबल के, और सनसेट और बिफोर सनराइज़ के बाद तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसको स्ट्रिक्टली अडेयर करेंगे तो उससे प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आएंगी सर्टेन सिचुएशंस में। तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये सिर्फ एक डायरेक्टरी है और इसकी नॉन कंप्लायंस जो है वो ऑटोमेटिकली उससे कोई अरेस्ट को हम इलीगल नहीं मान लेंगे, ठीक है। अरेस्टिंग ऑफिसर को लेकिन वैलिड एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्यों उन्होंने जो है सेफ गार्ड्स को कंप्लाई नहीं किया। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया पुलिस अथॉरिटीज़ को कि गाइडलाइंस इशू करें कि क्या जो है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइम यूज सर्वे 2024। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सेकंड एडिशन जो है टाइम यूज सर्वे का लॉन्च किया है। तो 2019 में पहला ये सर्वे किया गया था और ये बताता है कि इंडियंस जो है वो अपना टाइम कैसे एलोकेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वेरियस एक्टिविटीज़ में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, केयर गिविंग या लेजर में। तो इसमें हमें रिपोर्ट में देखने को मिला कि विमेन की जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो इंक्रीज़ हुई है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में 21.8% जो थी 2019 में, वो 25% हो गई है 2024 में। विमेन जो है वो 305 मिनट्स पर डे अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में जो है वो टाइम गुजार रही हैं 2024 में, एज़ कम्पेयर टू 315 मिनट जो 2019 में था। 41% जो विमेन है वो केयर गिविंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन सिर्फ 21.4% जो है मैन इस एज ग्रुप 15 से 59 के एज ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमें देखने को मिल रहा है शिफ्ट ऑफ विमेन फ्रॉम अनपेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू पेड जॉब्स। और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ेंगी, इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, फॉर्मलाइजेशन भी होगा लेबर का। लेकिन कुछ अभी भी जो है वो जेंडर डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। तो इसलिए जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज़ देने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट सपोर्ट की भी ज़रूरत है ताकि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ सके। और अगर हम देखें पीपल जो कि 6 साल से ज़्यादा एज के हैं, 175 मिनट्स पर डे वो कल्चरल, लेजर और मास मीडिया एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं। 89.3% चिल्ड्रन जो है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के, वो लर्निंग एक्टिविटीज़ में अपना टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि स्किल ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन करो, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ, सोशल सिक्योरिटीज़ बेनिफिट्स को एनहेंस करो और वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी इनिशिएटिव्स भी लेकर आओ, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पंच मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा जो है वो एक न्यू और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है, पंच मिशन, जो कि सोलर एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा। इस मिशन को जो है स्पेस एक्स के साथ मिलकर लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 4 सूटकेस साइज सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में डाली जाएंगी, जिसमें कि 3 वाइड फील्ड इमेजर्स होंगे और एक 1 नैरो फील्ड इमेजर होगा। और ये ईच ऑफ द 4 कैमराज जो हैं ये रॉ इमेजेस को पोलराइजिंग फिल्टर्स के साथ अलग अलग जो है वो कैप्चर करेंगे। तो अनपोलराइज्ड इमेज जो है हर 8 मिनट में कैप्चर होगी, ठीक है, हर कैमरा से। तो इससे हम कोरोना और सोलर विंड दोनों को 3D में जो है हम कैप्चर कर पाएंगे। और इस मिशन की लाइफ लगभग 2 साल होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वायत्त इनिशिएटिव। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने कमेमोरेट किए हैं 6 ईयर्स ऑफ स्वायत्त मिशन या स्वायत्त इनिशिएटिव, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मोटिव था कि जो विमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं या यूथ है लेड एंटरप्राइजेज हैं उनसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट की जा सके, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इनिशिएटिव के अंडर, जो कि एक इटसेल्फ एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है 2016 में जिसे बनाया गया था। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं, मिनिस्ट्रीज करती हैं, पीएसयूज करते हैं, उसके लिए, ओके। तो बेसिकली आप इसको ये मान सकते हो गवर्नमेंट का या अमेजोन या फ्लिपकार्ट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शेयर होल्डर्स जो हैं आईरीडा के, उन्होंने जो है अप्रूवल दे दिया है कि 5,000 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर सकती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से, इक्विटी शेयर्स के, ठीक है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? एक कैपिटल रेजिंग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो हैं इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं और उसको या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। तो उनको जो है अगर कैपिटल रेज करनी हो बिना लीगल पेपर वर्क के, मार्केट रेगुलेटर्स के थ्रू जो है वो कर सकती हैं QIBs से। और एक ये बहुत कॉमन हो चुका है अब इंडिया में, क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव वे है ये, उनको IPOs या FPOs में नहीं जाना पड़ता। और जो है फंड्स वो डोमेस्टिकली रेज कर लेते हैं और उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्राइफेड। ये टॉपिक इकोनॉमी सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए ट्राइफेड ने कुछ कंपनीज़ के साथ MOU साइन किए हैं। ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर, जिसको 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर। तो ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स के ऊपर फोकस है और करती है, और इंस्टीट्यूशनलाइज करती है ट्रेड ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, जो कि कलेक्टेड या कल्टीवेट किया जाता है इनके द्वारा। तो ये एज ए फैसिलिटेटर ये एक्ट करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये काम करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ताकि अपलिफ्ट हो सके। प्रोडक्शन ट्रेनिंग भी देते हैं ये स्किल्स एनहेंस करने के लिए आर्टिसंस को, ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ट्राइबल पीपल की थ्रू सेंसिटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्सेट्रा। और रिटेल मार्केटिंग ब्रांड भी है इनका, जिनका जो है जिसका नाम है ट्राइब्स इंडिया, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्वार्फ गैलेक्सीज। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टीम ऑफ साइंटिस्ट है US में, उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किए हैं लार्जेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स और ड्वार्फ गैलेक्सीज। तो ड्वार्फ गैलेक्सीज क्या है? स्मॉल गैलेक्सीज जो जिसमें कुछ ही बिलियन स्टार्स होते हैं, जबकि जो लार्जर गैलेक्सीज होते हैं उसमें तो कई हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। तो ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, लेकिन इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ये इनकी ल्यूमिनोसिटी कम होती है, मास लो होता है, साइज स्मॉल होता है। और कहा जाता है कि ये क्रिएट हुई हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जो अर्ली लार्जर गैलेक्सीज थी, जब या फिर इनमें जब कोलिजन हुआ तो उससे ये छोटी गैलेक्सीज बनी हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 21st अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंक्लूड किया है कि डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है जब कम्युनिटी में वो रूटेड हो। तो अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आरडो भी कहते हैं, वो एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि कंट्री की गवर्नमेंट जो है अफ्रीका और एशिया की वो आती हैं। 1962 में से बनाया गया था रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए। तो ये ओपन है सभी कंट्रीज़ को, अफ्रो या एशियन रीजन की, जो कि फुल या फिर कम से कम एसोसिएट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो इसमें 32 कंट्रीज़ आती हैं अभी अफ्रीका और एशिया की, और इसको ये इसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से, जैसे कि FAO, IFAD, UNCTAD, फिर यूनेस्को, UNDP। अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है।
So now let us see all these topics in English. So the first topic is nighttime arrest of women. This topic is important for your social issues. So Madurai bench of Madras High Court has ruled that the provision of restricting the arrest of women at night is directory and not mandatory under the BNSS 2023. The single judge had deemed an 8 p.m. arrest as a violation of Section 46(4) of CRPC, but a two-judge bench later clarified that this provision was not absolute. So, two safeguards have been provided under the BNSS. That is that no arrest of a woman shall be made after sunset and sunrise, before sunset or before sunrise, except in exceptional circumstances. In exceptional circumstances, a woman police officer must obtain prior written permission from the jurisdictional magistrate before making that arrest. The arresting officer must not touch the woman unless it is a woman or police officer or circumstances require it. Okay. Section 46(4) of the CRPC ensures the safety of women, but it does not explicitly define what qualifies as an exceptional situation. Court has observed that the CRPC does not specifically or the CRPC does not specify the consequences for non-compliance, which means that it is just directory and not mandatory. Arresting police officers Arresting officers perform a public duty, and strict adherence to such this procedure should not hinder law enforcement. For example, that if a serious crime has been committed by a woman at night, immediate arrest may be necessary. Okay, so time and again through the 135th Law Commission report and 154th Law Commission report, it was accepted that provisions for safety of women should be incorporated in the CRPC, and that's why in 2005, Section 46(4) of was added to the CRPC with modifications to enhance safeguards for women. So earlier, the Nagpur bench of the Bombay High Court had directed that no women should be detained without a lady constable and never after sunrise or before sunrise. But Supreme Court later clarified that this rule might cause practical difficulties in certain situations. Okay, so what will be the impact of Madras High Court ruling now? So court has clarified that this provision of BNSS is directory, which means that non-compliance would not automatically make an arrest illegal, but the arresting officer must have to provide a valid explanation for not complying with the safeguards. Court has also directed police authorities to issue guidelines defining what constitutes exceptional circumstances so as to ensure that this provision is not misused or ignored. So the next topic is Time Use Survey 2024. This topic is important for your social issues. So Ministry of Statistics and Program Implementation has released the second edition of the Time Use Survey, which showcases the significant trends in how Indians allocate their time to various activities, including employment, caregiving, and leisure. Okay, a key takeaway from this report is that we saw increase in women's participation in employment-related activities. The participation of women in employment-related activities has increased to 25% in 2024 as compared to about 21.8% in 2019 when the first such survey was conducted. Women are spending 305 minutes per day on unpaid domestic services in 2024 as compared to 315 minutes in 2019. 41% of the women between 15 to 59 age group are participating in caregiving activities compared to only 21.4% of the men in the same age group. Okay. So this shift of women from unpaid domestic duties to paid jobs has economic benefits also, including for the higher household incomes, enhanced productivity, formalization of labor. But there are certain still uh, problems with respect to gender disparities in workforce participation. So this is there, therefore there is a need for skill development programs, flexible work policies, government support. Okay, so as to encourage female workforce participation. People aged 6 and above are spending 171 minutes per day on cultural, leisure, and mass media activities. 89.3% of children aged 6 to 14 participated in learning activities. Okay, so this future outlook and recommendations by this survey say that we need to strengthen skill training, create more job opportunities, enhance social security benefits, and workplace inclusivity initiatives also.
So the next topic is Punch mission. This topic is important for your science and tech section. So NASA is gearing up for a new and first of its kind solar mission called the Punch mission, which will closely observe the solar atmosphere. This mission will be launched by the SpaceX. It will be a constellation of four suitcase-sized satellites, each weighing 64 kg, sent to the low Earth orbit. It will have three wide field imagers and one narrow field imager on board. And once every 4 minutes, each of the four cameras will capture three raw images using different polarizing filters. In addition, each camera will capture an unpolarized image once every 8 minutes. So, it is the first time that a solar mission has been specifically designed to make use of the polarization of light to measure the corona and solar wind, that too in 3D. Okay, the expected mission life of Punch mission is about 2 years. So the next topic is Swayat initiative. This topic is important for our economy section. So government e-marketplace has commemorated 6 years of Swayat initiative at New Delhi, and it was launched in 2019 with the clear objective of invigorating participation of women-led enterprises and youth in public procurement. Swayat is government e-marketplace portal commitment to annually procure from startups, women entrepreneurs, MSMEs, self-help groups, and youth. Okay, we all know Government e-marketplace is an online market platform which was set up in 2016 to facilitate procurement of goods or services from the sellers by government ministries, departments, public sector undertakings. Okay, so the next topic is qualified institutional placement. This topic is again important for your economy section. Shareholders of IREDA have recently approved the company's proposal to raise up to 5,000 crore rupees through the qualified institutional placement of equity shares in one or more multiple tranches. So this QIP is a capital raising mechanism through which public listed companies use to issue equity shares or convertible securities exclusively to QIBs. So this is a simple way to raise capital without having to submit legal paperwork to market regulators. It provides a quicker and cost effective alternative to traditional IPO or FPOs while ensuring minimal dilution of management control. So, QIP allows companies to raise funds domestically, reducing their dependence on foreign investors. Okay. So the next topic is TriFed. This topic is important for economy and social issues both. So in a significant move to promote tribal entrepreneurship and economic inclusion, TriFed has recently signed MOUs with certain companies. So TriFed is an organization under Ministry of Tribal Affairs. It was established in 1987 under the Multi-State Cooperative Societies Act. So it brings about the socio-economic development of tribals of the country by institutionalizing the trade of MFP or MFP and surplus agriculture produce collected or cultivated by them. So it acts as a facilitator and service provider for the tribal community to uplift the production, and it also provides training to enhance artisan skills. It all this TriFed also involves capacity building of the tribal people through sensitization or formation of self-help groups. TriFed has also been doing the retail marketing of tribal products under the brand name of Tribes India. Okay. So the next topic is dwarf galaxies. This topic is important for your science and tech section. So a team of scientists in the US have recently discovered the largest samples of intermediate mass black holes and dwarf galaxies with active black holes. Dwarf galaxies are small galaxies which typically contain just a few billion stars, unlike their larger cousins, which can hold hundreds of billions of stars. They are the most abundant type of galaxy in the universe, but they are difficult to detect due to their low luminosity, low mass, and small size. They are thought to have been created by gravitational forces in the early stages of the creation of these larger galaxies or as a result of collisions between galaxies. Okay. The next topic is African Asian Rural Development Organization. This topic is important for your international relations. So 21st African Asian Rural Development Organization concluded and reaffirmed that development is strongest when it is rooted in community. So ARDO is an autonomous intergovernmental organization comprising of country governments of Africa and Asia, which was established in 1962. So its objective is the development of rural areas. It is open to all countries of the Afro-Asian region, provided that it is a full or associate member of the United Nations. It currently comprises of 32 countries of Asia and Africa. It also enjoys observer status with the international organizations like FAO, IFAD, UNCTAD, UNESCO, and even UNDP. Its headquarters is located in New Delhi. Okay.
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.